ऐसे खत्म कर दो। और ये तो ठीक है, मेरे कहने हैं जो साइड आपको टेबल में छोड़ के है। वो जो ट्रैवल ग्रांट का मदन सिंह को बुला के वो टिक करवा दो। नमस्कार, वणकम। साहित्य अकादमी की ओर से आज होने वाली वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम में सभी आमंत्रित कवियों को और आभासी मंच से देख रही है सभी दर्शक मित्रों को हार्दिक स्वागत। आज हम देखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत होने वाली बहुभाषी कविता पाठ कार्यक्रम। At the outset, I heartily welcome all the viewers and invited poets to the Sahitya Academy's Webline Literature Series. Today, we are going to witness a literary forum program with multilingual poetry reading, and it is being conducted under Ek Bharat Shresth Bharat Abhiyan. इस कार्यक्रम किया जा रहा है भारत के आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में। इस कार्यक्रम में मैथिली और तमिल भाषाओं में कविता पाठ होगी। This program is being organized as a part of आजादी का अमृत महोत्सव celebrations, and in this program we are going to have poetry recitation in both Maithili and Tamil languages. Just I thought of explaining a little bit the background of this program, why we have been conducting. In fact, हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि दो अलग अलग राज्यों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उन सभी संस्कृतियां और आदान प्रदानों के बीच में शेयर करवाने के लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है। This program is being conducted to share the best practices of two different regions, and for which two different languages have been brought in form of a program at one platform. भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिनका ताना बाना विविध भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक धागों द्वारा बनाया गया है, जो स्वतंत्रता संग्राम से संयुक्त सांस्कृतिक विकास से समृद्ध इतिहास द्वारा एक समग्र राष्ट्रीय पहचान के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया था। India is a unique nation whose fabric has been woven by diverse linguistic, cultural and religious threads, held together into a composite national identity by a rich history of cultural evolution, coupled with a freedom struggle that was built around the tenets of non-violence and justice. समय और तकनीक के संपर्क और संचार के मामले में दूरियों को कम कर दिया गया है। एक ऐसा युग में जो गतिशीलता और आउटरीच की सुविधा प्रदान करता है, मानव संबंध और राष्ट्र निर्माण के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण के साधन के रूप में विभिन्न क्षेत्रों को लोगों को बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान स्थापित करना महत्वपूर्ण है। पारस्परिक समझ और विश्वास भारत की ताकत की नवीन और सभी नागरिकों को भारत के सभी कानों में सभी कोनों के सांस्कृतिक रूप से एकीकृत महसूस करना चाहिए। Time and technology have narrowed down distance in terms of connect and communication. In an era that facilitates mobility and outreach, it is important to establish cultural exchanges between people of different regions, and as a means to further human bonding and a common approach to nation building. With this aim only, the different programs are being organized under Ek Bharat Shresth Bharat Abhiyan. And Sahitya Academy in particular, we have been conducting ever since the program has started.
and by pairing different languages, like today we have yesterday we had a poetry recitation program in Dogri and Telugu language. Tomorrow we are going to have a poetry recitation in Malayalam as well as in Sanskrit. So today we are going to witness Maithili and Tamil. Like that, we have been pairing different regions at one platform to share the best practices of that region, of the language, and of that literature. So with these few words, once again, I wholeheartedly welcome all of you on behalf of most respectable Secretary Sir Dr. K. Srinivas Rao ji to this program. And now it's my honor and pleasure to invite Professor Pankaj Parashar ji to present his poetry in Maithili. Professor आदरणीय पंकज पराशर जी वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में आचार्य के रूप में काम कर रहे हैं, और आपने अब तक बहुत करीब 15 से अधिक किताब लिख चुके हैं। आप न केवल हिंदी और मैथिली भाषाओं में साहित्य सेवा कर रही है, बल्कि अनेक भारतीय भाषाओं में आप सेवा दे रही है, और आपके साहित्य व्यवसाय को देखते हुए कई साहित्य संस्थाओं ने अपनी साहित्य पुरस्कारों से विभूषित किया है। इन शब्दों के साथ आपको स्वागत करते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी कविता पाठ मैथिली में प्रस्तुत करते हुए इसका अनुवाद हिंदी अथवा अंग्रेजी में भी प्रस्तुत कीजिए। पंकज पराशर। Thank you very much, Suresh ji. जी। Welcome to everyone. All through today's poetry recitation, two Tamil poets, Mr. Ram Santosh ji and Dr. R. Tamiz RC ji, as well as my Maithili poetess, respected Sarda ji, are on the program. I will begin by reading some of my poems in Maithili, followed by English and Hindi. In fact, only Sarda ji and M. Suresh ji can grasp my poetry in its original language. No problem. I asked two of my fellow poets who have spoken English to translate my poems, but for an unspecified reason, they were unable to do it. So I decided to do the translation myself. I was able to translate the language, but I found it exceedingly difficult to convey the flavor and cultural background of my language from the source to the target language. All right, please allow me to begin my recitation. मेरी पहली जो कविता है मैथिली में, उसका शीर्षक है द्वारबंधी स्वर उजास। भोरुकबा उगैत देरी, जतऽ शुरू होइत छल 19वीं शताब्दीक अलसैल भोर। कांखि तौलैत जोहराबाई के कोमल स्वर उड़ान, राग भैरवी सुनि होइत छल हराही में सूरजक बिहान। माछे माछ पसरि जाइत छल स्वर उड़ान सँ आयल भोर के, हाट हाट में उठैत स्वर उठान में, बाट बाट में फुला जाइत छल कतेक रास फूलक कोढ़ी मिया के तोड़ी जकाँ। गमकैत सिंगारहारक पथार, कतेक रास वाद्यक झनकार, आ कतेक रास गानक स्वर पहाड़। माछे माछ पसरि जाइत छल स्वर उड़ान सँ आयल भोर के, हाट हाट में उठैत स्वर उठान में, बाट बाट में फुला जाइत छल कतेक रास फूलक कोढ़ी मिया के तोड़ी जकाँ। गमकैत सिंगारहारक पथार, कतेक रास वाद्यक झनकार, आ कतेक रास गानक स्वर पहाड़। भाव जे व्यक्त होइत छल संस्कृत में, मैथिली में, गमकैत अभट्ट आ ब्रजबुलिक माधुर्य में, दंडवत संराग दरबारी कतेक युग सँ अबैत छल रसपूरित द्वारबंधक निरंतरता में। भोर होइत छल ओहिना जेना कतौ होइत छल भोर, भोर होइत छल ओहिना जेना कतौ होइत छल भोर। साँझ होइत छल ओहिना जहिना कतौ राति, तरेगन भरल आकाश में, मुदा एहि पृथ्वीक द्वारभंग में ने भोर होइत छल तहिना, ने साँझ ने राति ओहिना।
राग भूपाली सो उठे आलाप निसार होइत छल राग हंस ध्वनि में। राग भूपाली सो उठैत आलाप निसार होइत छल राग हंस ध्वनि में। राति के गाढ़ करे द्वार बंग के ओंघायल आंख आंख में। कोना न्योछावर करैत छल इजोरिया निशब्द चंद्रमा। पूरिया धनास्त्री में मातल द्वारभंगी रैतिक भोर सँ पहिने कोना चाहा उठैत छल फुलकोका अमृत अमृत कहि के। 14वीं शताब्दी सँ उठैत लिखो फेन जे होइत छल गोसाउनिक गीत सँ फोका फोका। 14वीं शताब्दी सँ उठैत लिधुर फेन जे होइत छल गोसाउनिक गीत सँ फोका फोका। ब्रह्म मुहूर्ते सँ पुछारि करैत भोलानाथ सँ दुख हरबाक अवधि कोना औंढायल घुरैत छथि युग युग सँ उपाध्याय उमापति। माछक देख चाल फेकाइत जाल रहुआ बुआर देखि उठैत मछुआ समूहक हुल माल। भिनसरे सँ कोना भाव विभोर गबैत रहैत बंग देशक चैतन्य मैथिल कोकिलक जीवन राग। भोर जे पूब सँ अबैत छल भोर जे पूब सँ अबैत छल पश्चिम में होइत छल साँझ। कोना पसरल तरेगन जकाँ छिड़िया जाइत छल सौंसे वर्ण वर्ण सभक अनमोल रत्नाकर बंग देश धरि। समदाउन जकाँ जे हारैत छल बहुत दूर धरि स्मृतिक व्यास। समदाउन जकाँ जे हारैत छल बहुत दूर धरि स्मृतिक व्यास। पूछैत छल कतेक रास प्रश्न कतेक रास बात काल कहार सँ कईक सदी के उदास आंख निर्निमेष तकैत आइयो ओहिना जना आरोहित राग खमाज। ओहिना भोर नहीं होयत नहीं हटत ओहिना गहन घन अंधकार। भोर ओहिना नहीं होयत नहीं हटत ओहिना गहन घन अंधकार। ओहिना नहीं होयत भिनसर नहीं होयत ओहिना भोर द्वार बंग में। सत्ता बिसरि गेल जीवन राग सत्ता बिसरि गेल जीवन राग। भूगोल तो वएह थी मुदा विलुप्त अछि कण कण सँ। ओ दिन ओ साँझ ओ राति ओ हृदय सँ उठैत रातिक आलाप जे पसरैत छल बनि के द्वार बंगी स्वर उजास। जी, इसका कविता अनुवाद है। भी। जी हाँ जी। मैं सोच रहा हूँ कि पहले मूल का पाठ कर लें फिर अनुवाद का। नहीं, ये तो पहले कविता पाठ हो गए ना, पहली कविता हो गई ना मैथिली में। जी अभी इसका अनुवाद बता के दूसरे कविता भी प्रस्तुत कीजिए। इस कविता का अनुवाद नहीं कर पाया हूँ दूसरी कविता का अनुवाद उपलब्ध है तो अच्छा अच्छा। अनुवाद में दूसरी कविता सुनाऊंगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जी जी। तो आप कहें तो दूसरी मूल में पढ़ूं या अनुवाद पढ़ूं? दूसरी मूल पढ़ने के बाद उसका अनुवाद पढ़ लीजिए। अच्छा। मैं एक कविता का जिसका मैंने अनुवाद किया है हिंदी में वो पढ़ हम्म सुना रहा। हम्म दंत कथाओं में स्त्रियां घरों में थी जंगलों में थी बड़े बड़े महलों और बड़े बड़े कोठों पर थी। कुछ कटी कटी सी कुछ सोलह श्रृंगार किए हुए कुछ तरह तरह की चीजें बनाती हुई रसोई में जहां भी थी जैसी भी थी कहीं न कहीं से निर्वासित थी। स्त्रियां घरों में थी जंगलों में थी बड़े बड़े महलों और बड़े बड़े कोठों पर थी। कुछ कटी कटी सी कुछ सोलह श्रृंगार किए हुए कुछ तरह तरह की चीजें बनाती हुई रसोई में जहां भी थी जैसी भी थी कहीं न कहीं से निर्वासित थी। कुछ प्रतीक्षारत थी कुछ अपने नरक कुंड में कुलबुलाती हुई कुछ अहल्याएं और उर्मिलाओं की तरह प्रतीक्षारत कुछ यशोधरा की तरह प्रश्न करती हुई पितृसत्ता के नक्कार खाने में महज ऊटी भर जो स्वर्गाकांक्षी पुरुषों को जन्म देकर भी कबीर मुख से भुजंग को भी अंधा करने वाली ही गुवाची गई। उनके पास बातें बहुत थी यादें बहुत मगर जुबान की जगह सिर्फ सहिष्णुताएं थी
और कुलीनता के साथ पुश्तों का भार। उनके पास बातें बहुत थी, यादें बहुत, मगर जुबान की जगह सिर्फ सहिष्णुता थी और कुलीनता के साथ पुश्तों का भार। उन्हें इंतजार था यादों की अशोक वाटिका में, 7 वचन और 7 फेरों का महज कर्मकांड। वह चाहे धर्म ग्रंथ में बंद उर्मिला हो या जीवन की कैद में घुटती हुई कोई इरोम शर्मिला, जिनके हिस्से में हमेशा आया है सत्ता का अहंकार और एक अंतहीन इंतजार। दूसरी कविता मैं मैथिली में पढ़ रहा हूँ। जी। सुरक्षेप करैत कजनी बाई। महाराज कामेश्वर सिंह के भरल दरबार में ठेठ मैथिल राग सुरह राग संग। महाराज कामेश्वर सिंह के भरल दरबार में ठेठ मैथिल राग सुरह राग संग, राग सिंदूरा मल्हार गबई। गायिका कजनी बाई केर स्वर धार में कोस कोस धरिक कान से करैत रहैत हेल डूब। सिंह विशेश्वर तक डूब द उगैत संध्या काले में। से कजनी बाई मैट फेंकैत रह रहा दरबारे में, गायनो परांत राम चतुर मल्लिक के, जे बिना किछु बजनहि गबैत ठुमरी के बंदिश। जकर पुनरावृत्तिक आग्रह करथिन कजनी बाई, सुरक्षेप करे सबसँ पहिने भरल दरबारे में। से कजनी बाई मैट फेंकैत रह रहा दरबारे में, गायनो प्रांत राम चतुर मल्लिक के, जे बिना कुछ बजनहि गबैत ठुमरी के बंदिश। जकर पुनरावृत्तिक आग्रह करथिन कजनी बाई, सुरक्षेप करे सबसँ पहिने भरल दरबारे में। कोसी में, कमला में, बेगवती बागमती के धार में पना बहि गेल भरल दरबार में कैल ओ सबटा सुरक्षेप। स्त्रीक ओ चातुर्य अब मौन कवच में झाँपल, स्वरारहंकार जे इतिहास सँ स्मृति धरि दुगुन में बजैत छल। कोसी में, कमला में, बेगवती बागमती के धार में पना बहि गेल भरल दरबार में कैल ओ सबटा सुरक्षेप। स्त्रीक ओ चातुर्य आ मौनक कवच में झाँपल, स्वरारहंकार जे इतिहास सँ स्मृति धरि दुगुन में बजैत छल। से अकाइन के सुनियौ, से अकाइन के सुनियौ सुरक्षेपे के वह शैली में एखनो धरि कजनी बाई के स्वरपूरित अहंकार। इसका जरा अनुवाद समझा सकते हैं? हाँ, ये एक ऐसी गायिका हुई थी महाराज दरभंगा के दरबार में, जिनके बारे में मिथिला में भी 99% लोगों को नहीं मालूम है। वो रामचतुर मल्लिक के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हीं के समय में कजनी बाई एक हुई थी जो कि खड़े दरबार में पुरुष गायकों को चैलेंज करती थी, इस चीज को इस तरह से गा के दिखाएं। उसी की स्मृति की पुनर्रचना इसमें मैंने करने की कोशिश की है। जी 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 जी। तो वही है। कुछ मिथिला के ऐसे गायक गायिकाओं के बारे में मैंने अपने नए संग्रह के बारे में लिखने की कोशिश की है, जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो जी वही एक उस सीरीज में कजनी बाई के बारे में जी जी। मैंने लिखा। बहुत बहुत एक धन्यवाद। मैं हाँ इंग्लिश में एक तमिल के दोस्त के लिए एक सुना के खत्म कर रहा हूँ। जी जी, कदम हाँ, कर ली। एक ही बस कविता सुनाऊंगा हम्म। जी। इसका शीर्षक है फार्मलैंड, यानी खेत। ओके। न्यूमरस मर्डर्स, numerous inky white papers formed in this Mahabharata 8 members of both clans. One ran to Delhi, someone Punjab, someone went to the eastern land Bengal. Police kept chasing with arrest warrant in hand. Everything was lost in seizure. Even what came from the farmland, waiting for seeds, field remained therein, awaiting for farmers, farm turning to forest. Attachment with land, detachment with human. I saw the victory of Kurukshetra
departing towards Himalayas. Attachment with land, detachment with human. I saw the victory of Kurukshetra departing towards Himalaya. Duryodhanas, Yudhishthira's of plain being farmed behind farms, while returning on these farms in the darkness of evening. After victory over the tricks of Menelaus, truth lies, morals, immorality, remembrance of the kinsfolk behind farms will force, and who knows, the road of victory too might turns toward the Himalayas. Thank you very much, Thank Suresh ji. thank you so much, Dr. Pankaj Parashar ji. As you rightly said, I think once Professor Noam Chomsky, the famous linguist of Wisconsin University, Chicago. So he was attending one conference on translation at University of Hyderabad, where I attended the conference. So at the conclusion, he is the one who has given the inaugural address. So he was there till the conclusion of that workshop. In fact, translation symposium. So in the conclusion, while he's presenting his concluding remark, he said, I'm unable to express my feelings and I'm unable to translate my feelings into the English, because though it is a translation workshop, because many expressions can't be translated into other tongue from our mother tongue, because his mother tongue is Spanish and he is unable to express it the same into English. So I think, as you rightly said, many things can't be translated at times. So thank you so much, Dr. Pankaj Parashar ji. Now we shall listen to our young Tamil poet, Sri Ram Santosh, who is presently doing his research in Tamil on Tolkappiyam, the great grammar book of Tamil language, and is a research scholar and dedicated himself to the Tamil poetry. And so with these words, I welcome Sri Ram Santosh to this poetry recitation. And Ram Santosh, you are requested to present your poetry in Tamil with followed by translation in Telugu. Yes. Am I audible? Yeah, you are audible. Thank you, sir. A very good morning to one and all. Mr. Deputy Secretary of Sagat Academy, poets of Maithili, Pankaj, Shardaji, and Madam Dr. Tamalarasi. Actually, I got 4 poems with me. Please, no problem. Two are actually related to love. One about the virtual love. One is with classical touch. Another one is about welcoming the new year at quarantine. And also the another one is actually related to womanhood. First, I go for the welcoming new year. Before that, I would like to thank the convener of Tamil and the members, and especially for the translator who spent nearly 3 days for translating this into English. Because I can speak a little English, but I don't know. I'm not unable to translate into English, because the achieving, as Pankaj said, the Deputy Secretary said, it is not an easy job to achieve the original into the forget language. So I thank my translator, Lata Ramakrishnan ji. Of course, she didn't even sleep yesterday night, actually. We're still discussing on editing or something. So it's my duty to thank her. Okay, let me go for the first one. First, I read it in Tamil. பேருளிர்க்கு இடையில் பிறக்கும் வருடத்தை வரவேற்றல். This is the title. வருக என் புது வருடமை, நான் எதற்கும் தயாராக இருக்கிறேன். எப்போதும் வலசை பறவைகள் என பருவங்கள் தோறும் திருந்தலையும் யாவரையும் நீ ஒற்றை கூட்டில் வாழும்படி நிந்தித்து விட்டாய். எனினும்
ஒரு கலைஞனாக நான் எப்போதும் என் கால ஆதி தொட்டே கூடடைந்துதான் இருக்கிறேன். அந்த அளவில் உன்னை நான் ஒரு சிறு பழிப்பு காட்ட முடியும். என் செல்ல வருடமே, நான் செய்வதையே தான் செய்து கொண்டிருப்பவன். அப்படியே தான் நான். அதுவே எனது இயல்பு, அதன் சில நேரத்திய சலிப்பு. அதனால் தானோ என்னவோ நான் புத்தகங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறேன். நான் தேர்ந்தெடுக்கும் புத்தகங்களை எனது பருவங்களை தீர்மானிக்கின்றன. அது விஸ்தரிக்கும் விதவிதமான வாழ்க்கைகளில் நானும் ஓர் ஜீவியாகி அஜீவன்கள் அனுபவிக்கும் குளிரை, வெம்மையை, கொட்டும் மழையை அனுபவிக்கிறேன். ஒற்றை 4 சுவருக்குள் நான் 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 என பலரோடு நான் வாழ்கிறேன். தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் வருந்துகிறேன், வாதை கொள்கிறேன். நான் அழும்போது எதுவோ ஒன்று என்னை சிரிக்க வைத்து விடவும் செய்கிறது. அதற்கு உன் குணம். தெரு தெருவாக எல்லைகளை தாண்டி நான் அறியாத ஒரு புது கலாச்சாரத்தின் எந்த ஒரு பிரதிநிதியையும் சந்திக்கும் போது அவனோ அவளோ பால் புதுமையினரோ என்னை போலவே இரு கண்கள், கை, கால்களோடு என்னை விடவும் மேலானவராக அல்லது என்னை விட துர்பாக்கியமானவராகவோ அல்லது அவர்களைப் போலவும் நான் இருப்பதை கண்டு வியக்கிறேன். வா என் புது வருடமே, நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். என்னைப் போலவே அவர்களும் எங்கோ ஒரு மூலையிலோ எனது அருகிலோ உயிரோடு தான் இருக்கிறார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. நாங்கள் கூடடைந்தாவது எஞ்சி விடுகிறோம், பரவாயில்லை. ஆனால் அவர்களே நானும், என்னை அவர்களும் வாசிக்கவாவது எல்லோரையும் பழைத்திருக்கும்படி செய். என் உள்ளே நான் உச்சி முகரும் பெருநம்பிக்கையில். This is a Tamil one. Yeah. The next, actually, the translation of this same. I wrote it on 1st January 2021, the quarantine, which is new to me, not to celebrate the new year. I don't know. So this is the situation. Title is Greeting the Year Being Born in the Midst of Catastrophe. Come, my new year, welcome. Come, what may, I am preferred. All those who would be always on the move as migratory birds are damned by thee to stay caged in the isolated nets. Yet, as an artist, I'm always, right from my primordial days, remain in my own nutshell. To that extent, I can mock that thee without being sarcastic. Oh, my pet new year, I keep doing what I have been doing. That is my nature, and the weariness of it at times. Maybe that's why I choose books, and it is they that I choose determine my age. The different lives it expands, I too turn into a species and experience the chill, heat, the torrential downpour, and many more. In just a lone four-walled space, I live with I, and I. So many, oh my. To put it more precisely, I suffer, I regret, I get hurt, I'm pained. When I cry something, after that takes after you, so to say. Wading through streets after street, going beyond borders. Whenever I come across a representative of some unknown culture, she, he are of unisex. They have the same 2 eyes as mine, hands and legs alike. Either better being than me, or more unfortunate than I am, or that I am being the replica I witness and have become wonderstruck. Oh, come, my new world, I beseech thee, I just ask me, they are also. Somewhere near or far in some remote corner,
staying alive. I strongly believe, let's be so attaining huddled in our nets itself. It is all right, but I beseech thee, keep us all alive. Let us survive so that I can read them and they can read me. Please have mercy on my destiny. I hope, great hope, whom I kiss wholeheartedly. The English version of that. Go for the next. First, I explain the situation. For the last 30 years, there has never been a basic toilet facilities for those living in the area surrounding the lake. In this situation, when the passage was blocked, making it is impossible for the ladies to use the lone public toilet there, I just couldn't bear the sight of my mother's suffering, not being able to attend to the nature school. This poem was born then, highlighting the sufferings of womanhood in general. Age 21st century, season, rainy season, a present, the time of being without public toilet. The Tamil version. பொது கழிப்பறைகளுக்கான தேவபாதைகள் அடைக்கப்படும் மகள். கழிப்பறைகளுக்கான தேவபாதைகள் அடைக்கப்படும் போது நான் என்ன செய்வேன் அம்மா? ஒரு ஆணை போல கொட்டும் பெருமழை பாதைகளோரமும் ராத்திரியிலோ மந்த பகலிலோ கண்கள் ஆயிரம் பரப்பும் வெளிச்சத்தில் கூச்சத்தை விளக்கி ஏனும் யாரை நம்பி எதன் துணையில் நான் கழிப்பேன் என் கால்களை விளக்கி. தாய், துயரின் மகளை பழகுவது எளிதுதான் என் பாசப்பெண்டே, ராத்திரி உனக்கு அருளப்படும் மட்டும் கொஞ்சம் போல் அடக்கி வைத்திருப்பது கடினம்தான். என்றால் நீ தனித்திரு குழித்திரு, பிறகு இது வேணும் வாய்த்திருக்கிறதே என அக்குளியலறைக்குள் செல், அங்கேயே கழிக்கப்பட்ட அந்த வறிய தேவதையின் தங்க எச்சத்தை தரையில் மஞ்சள் கிழங்கன தேய்த்து வெளியேற்று இப்பெத்தாம் பெரிய சமத்துவ சாக்கடையில். ஆனால் சில நாட்கள் மட்டும் என் மகளே, தங்க மகளே, கொஞ்சமே கொஞ்சம் போல் உன் உடம்பில் மிளிரும் அந்த நிஜ மஞ்சளில் மட்டும் துர்மலத்தின் நாற்றம் மாறாது மணக்கும். அதையும் நீ பழகுவாயாக என் துயரின் மகளே, வருங்கால பறவை. உதயந்த பேரூராட்சிக்கும் ஆட்சியாளர்களுக்கும். The English version. When the holy paths leading to public toilets are blocked. This is the title. Daughter. When the holy paths leading to public toilets are blocked, oh, mother, how helpless I am. Just as a male in this torrential tempo, be it on the roadside or along some corner, either in night or during pale day, the full of glare of thousands of eyes, casting aside my timidity, oh, trusting whom, aided by what, will I proceed to shit with my legs apart? Mother replies, oh, the daughter of sorrow, you can't get used to it quite easily. Oh, my affectionate young woman, till you are blessed with nights, true, controlling it would provide a Herculean task. Yet, till that time, be alone and to stay awake gracefully. Then, feeling thankful for having at least this get inside the bathroom, shit right there, and crush the poor angel's golden leftover as tube and discharge on the floor of this great grand cutter of parity. But just for some days only, my daughter dear, oh my daughter dear, just lightly or too slightly,
upon the yellow glowing on the theme, upon the yellow real glowing on the theme. A strength would spread without fail. Get accustomed to that also, please. Oh, my daughter of sorrow. Oh, the bird of future. Dedicated to the Yandram Panchayat and the powers that be. Okay. The next one is related to the virtual love. Okay, we are practiced more into virtual, not to the real physical thing. We are now also we are conducting the event through the virtual. Okay, this is actually virtual love. The Tamil version. In Kadar Kaipavai. நான் உன் திரையினில் மட்டுமே வாழத் தகுந்த வீரியாகிவிட்டேன். எப்போதும் என் கரங்கள் அனிச்சையாக பற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன உன்னை. நீ மிச்சம் வைக்கும் காலம்தான் எனது இதர லௌகீக வாழ்க்கைக்கானது. நீதான் அவளை கண்டறிந்தாய். எனக்கு அவள் என்பது நீதான். அவளுக்கு நான் என்பதும் நீயே தான். அவளும் நானும் இன்னும் ஒரு முறை கூட நேரில் சந்தித்துக் கொண்டதில்லை என்று சிலர் புகார் கூறுகின்றனர். அவர்களுக்கு இன்னுமா தெரியவில்லை என் கண்களின் நீதான் என்று. உன் திரையினில் ஆழ்ந்து போன என் பார்வையின் மீதியை அவ்வப்போது மீட்டு இந்த ஊரையும் பார்க்கிறேன். அதன் ஊடாய் கண்டதை விடவும் அத்தனை வனப்பானது ஒன்றும் இல்லை. கண்ணே, மணியே, போனே. English version. My dear digital love, I have turned into a species fit enough to live in your touch screen alone. Forever my hands keep holding you, albeit involuntarily. It is the time you choose to leave aside is for my practical life. It was you whom accessed her. For me, her means thee. And for her, I am but you. She and I have never met even once. So some complain. It is time for them to know that you are the retina of my eyes. Retrieving the residual vision of my eyes that stay glued on your screen now and then I do view. This place I dwell in, alas, it lacks the luster and glow of all that I see through you, you know. Oh, my dear, my love, my mobile. So I think thank you, sir. Taking into the time, thank you so much, Sri Ram Santosh, for presenting your wonderful poetry. But as you rightly said, you are about virtual love. But many things can't explain by Google or the modern technology GPT chat. No, it's sarcastic poetry. Yeah, that's what I mean to say. Many things can't be expressed by GPT chat. Can't answer many things. I know that. And Google can't answer. If you ask Google that how to respect our teacher or how to take care of the parents, does the Google replies? Not at all. So maybe the virtual love remains for only for few things, not for everyone, because it is not natural. Whatever the thing that is unnatural remains always unnatural and far from reality. So thank you so much for bringing such a wonderful feeling of virtual love. Now we shall अभी हम लोग सुनेंगे सुश्री शारदा झा जी से मैथिली में कविता पाठ। सुश्री शारदा जी, आप न केवल अंग्रेजी और तत्वशास्त्र में आपने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, बल्कि आपने बीएड भी कर चुके हैं। वर्तमान में आप हैदराबाद में एक महाविद्यालय में अंग्रेजी भाषा का अध्यापिका के रूप में आप सेवा कर रही है। आपने अब तक 4 से अधिक कविता संपुटे प्रकाशित कर चुके हैं और
आपके कविता व्यवसाय को, साहित्य व्यवसाय को देखते हुए कई प्रशंसा और पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन शब्दों के साथ आपको इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी मैं कविता भी पाठ। इनकी कविताओं का बड़ा प्रशंसक हूँ सुरेश जी। जी 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 मैं भी इनकी कविताओं का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ जी जी, हम लोग सुनने के बाद मैं और भी प्रशंसा उत्सुकता से करूंगा। सुनेंगे। जी जी, आप सभी के आपको स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कविता पाठ मैथिली में साथ साथ इसका अनुवाद भी प्रस्तुत कीजिए। शारदा जान। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों और सभी देखने सुनने वालों को मेरा नमस्कार। तो मेरी पहली कविता है बिना अपराध बोध के। अपन कल्पना आ स्वप्नक दुनिया में स्त्री होइत अछि मात्र एक गोट स्त्री। सामाजिक सबटा संबंध के नकार कऽ ओ चुनैत अछि अपना के बिना कोनो अपराध बोध। कोनो गाछक छाहरि तर निस्भेर दुपहरियो में हेरैत अछि स्त्री पियर आकाश में नील चंद्रमा जे सब दिन दुनू पत्नीक बीच बहैत रहैत अछि नून छराइन पानि में। कारी भऽ जाइ छै सूरज स्त्रीक कल्पना में, कारी भऽ जाइ छै सूरज स्त्रीक कल्पना में आ ओकर छाह में जियबैत अछि ओ अपन भविष्यक सूरजमुखी खेत। ओसक बुन ओढ़ने ठाढ़ तरेगन सबक चमक गौरऽ लगैत छै स्त्रीक तरवा में कांट जकाँ। पटिया पर ओछाओल देह पर अभरऽ लगैत छै मोनक घाहक चिन्ह। ठोर बनि जाइ छै धरकर हाँसू जे काटि कऽ खसा देबऽ चाहै छै सबटा प्रेम गीत आ विरहक राग जकरा सुनबाक लेल लगले रहि जाइत छै ओकर मोन। स्त्रीक वास्तविकता आ ओकर कल्पनाक बाट हेरा जाइत छै सामाजिक जंगल में। ओ सबटा जनितो देखितो नहीं उठबैत अछि वास्तविकता बाट दिस अपन डेग। अपन स्वप्नक संसार में ओकर हरियर लहलहाइत गाछ सन मोन अपने में परिपूर्ण अपन जीवन जीव रहल। मात्र एक गोट स्त्री भेनाइ करैत छै ओकर जीवन पूर्ण बिना कोनो अपराध बोध। Now I'll have the translation of this poem, which is done by Sujata Jha, a research scholar from Patna. She loved this poem and she had done it on herself and she had shared with me, so I had this one with me. The title is Without Any Guilt. In the world of imagination and dreams, a woman is only a woman. Negating all societal ties, she chooses herself without any guilt. Beneath the shade of a tree, in the lofty afternoon, woman is seeking a blue moon in the yellow skies, which every day between the lashes keeps flowing in the salty waters. The sun becomes black in the imagination of a woman. The sun becomes black in the imagination of a woman, and in its shade, she keeps alive her future, a sunflower-laden field. Sparkles of dew-covered shining stars pricks her soles like thorns. Her body lies scattered on the carpet. On it lies the burden of her heart's wounds. Lips turn into a sharp knife, which wants to cut and thrash love songs and notes of separation, to hear which her heart always pines. The woman's reality and the limits of imagination is lost in the society's dense jungle. She knows it, she sees it, yet she does not take a step forward towards reality. In the world of her dreams, her mind, like the luscious green trees, is content in itself. She is living her life. To live like a woman completes her existence without any guilt. Now the second one. Yeah. इस कविता का शीर्षक है के बचत कहीं युद्ध में. This is on the background of Russia-Ukraine war, which I felt I wrote. शतरंजक 64 मासा एकैटा हमर घर
बाकी 63 का घर छै अनका आनक हमर नहीं रहे छी हम कोनो आन घर में चलैत छी अपन चाइल मात्र अपन बेर एला पर मात्र अपन जान बचेबाक लेल कारी उज्जर खानाक चुनाव हमर नहीं कैल अछि हम किछु भऽ सकैत छी सिपाही मंत्री हाथी घोड़ा अथवा ऊंट राजा आकि रानी से मुदा हम अपने घर से सबटा देखैत सबक चाइल पर ध्यान धरैत अपन चाइल चलि रहलहुँ अछि अपना के बचबैत दोसरक जान लेब छैक एखन नव समाजक नवका खेल युद्ध करब हमर स्वभाव युद्ध करब हमर स्वभाव नहीं खेल ककरो आनक छै हम मात्र अपन घर में बैसल एकटा बड़का खेलक हिस्सा छी शतरंजक 64 खाना में युद्ध हेतै सब मारल जेतै अपन घर में 63 घर जीवनक एक घर मृत्यु खेलक अंत में बचते मात्र हाहाकार अहंकार अत्याचार व्यापार बचब ने हम ने अहाँ Now translation for this one is survivor in a war. Out of 64 squares on the chessboard, I belong only to one. Out of 64 squares on the chessboard, I belong only to one. Rest of the 63 squares belong to someone else. I do not stand in someone else's square. I move for myself. I move when it's my turn, only to save myself. I do not choose my side. It could be black or white. It could be anything. I could be anything, a rook, a bishop, a knight, or a pawn, or a queen, or a king, maybe. I keep an eye on everyone, assessing everyone's move. Then I plan my strategies and execute. To save oneself and kill others have become a new game in the society. War is not my disposition. War is not my disposition, it's always someone else's choice. We are merely a small part of someone else's plan. We participate while being neutral in our own squares, and the whole chessboard will get entangled in the war. All of us will perish in our own squares. Death seeks only one and leave 63 for life, as they say. But in the end will remain only outcry and lamentation. Ego, tyranny, and cold-blooded trade. There will be no survivors, neither you nor I. So symbolic and so suggestive. One more poem from Sharda Chachi. मेरी तीसरी कविता इसका शीर्षक है अपन कविता खोज में बिसरल जा रहल छी जीवाक आस भरोस प्रेम रहित जीवन में क्रांति कोन अर्थ विकराल काल में लुप्त भेल हमर कविता तकनेও नहीं भेट रहल अछि आक्रोश में भेटत कि मृत्यु में कतऽ हेतै ओकर ठाम के कहब से कहब अछि कठिन एहि चुप्पीक चित्कार में ओनायल मोन अहुरिया कटैत अछि गहन निद्रा में देखल स्वप्नक टूटब सँ पहिने जोगा कऽ राखि लेबऽ चाहै छी अहाँक चुंबन अपन अवचेतन मोनक कोनो कोन में जे हेरा ने जाय हमर कविता जकाँ जहिया अहाँ कहलहुँ लिख दिया अपन कविता हमर ठोर पर हम राखि देलहुँ अपन हृदयक सबसँ कोमल भाव अक्षर में लिखलहुँ कविता में प्रेम हम अपन चुंबनक संग अहाँ के सौंप देव जहिया ताकब अहाँ अपन मोन हमर कविता में हम बूझ नहीं सकल रही वो अहाँ प्रेम छल आकि प्रलय काल में जीवन बचेबाक प्रियोन कविता में जीवन मूल्य बचाओल जाए से तो भरसक बूझल छल कविते में बाँचल रहत हमर प्रेम से हो से आप बुझलिए आँख तोर पर ताकब अपन कविता है हमर जीवन सबसे पैघ क्रांति इस कविता का अनुवाद हिंदी में जी कविता का शीर्षक अपनी कविता की खोज में भूलती जा रही हूँ जीने के आस और विश्वास को प्रेम रहित जीवन में क्रांति का भला क्या अर्थ प्रेम रहित जीवन में क्रांति का भला क्या अर्थ
इस विकराल समय में लुप्त हुई मेरी कविता ढूंढने से भी नहीं मिल रही। वह आक्रोश में मिलेगी या मृत्यु में, उसकी जगह अब कहाँ है यह कहना मुश्किल है। इस चुप्पी के चित्कार में घुटता मौन बेचैन है। गहरी नींद में देखे स्वप्न के टूटने से पहले संभाल कर रख लेना चाहती हूँ तुम्हारा चुंबन अपने अवचेतन मन के किसी कोने में, कि वह भी खो न जाए मेरी कविता की तरह। जब तुमने कहा था लिख दो अपनी कविता मेरे होठों पर, अपने चुंबन के साथ सौंप दूंगा तुम्हें जब ढूंढोगी तुम अपना मन अपनी कविता। मैं समझ नहीं सकी थी वह तुम्हारा प्रेम था या प्रलय काल में जीवन बचाने की तरकीब। कविता में बचाया जाएगा जीवन मूल्य, यह तो शायद मुझे पता था। कविता में बचाया जाएगा जीवन मूल्य, यह तो शायद मुझे पता था। कविता में बचा रहेगा मेरा प्रेम भी, यह मुझे अब पता चला। तुम्हारे फोटो पर अपनी कविता को ढूंढना होगी मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद और सुंदर शारदा जी, आपने इतना कवितात्मक और प्रतीकात्मक रूप में जो चेस बोर्ड की आपने वर्णन किया है, उसी हिसाब से जीवन से वो चेस बोर्ड को जीवन में जैसे आपने जोड़ दिया, वो बहुत बहुत it was a wonderful expression, because comparing the chessboard's movements and places with the life and its reality is something wonderful. So thank you so much for your poetry. Thank Now you so we much, shall sir. move Thank you to for this opportunity. Thank you. Thank you. Of course, you are given opportunity for your because of your poetic fragrance. It's obvious. And now we shall move to Tamil language. We have in our midst Dr. R. Thabijharsi, who is now presently working as a head of the Department of Tamil. And one thing I should bring to the awareness of the viewers that Dr. R. Thabijharsi ji has penned more than 11 books, 6 poetry collections, and 5 essay books so far. And she has dedicated herself for the propagation of Tamil language and literature. And one unique and great thing is that for all her contribution to Tamil language literature, she has been bestowed with more than 16 awards so far for all her commitment and contribution to Tamil language. And more than that, her poetry collections and essays have been included in the curriculum of both undergraduation as well as post-graduation of different universities. So with these few words, I once again welcome Dr. R. Thabijharsi ji to this poetry recitation, and I request ma'am to kindly present your poetry in Tamil with translation in English. Ma'am. அனைவருக்கும் வணக்கம். கேக்குதுங்களா சார்? ஆடியோ பிளாஸ் சார்? ஜி ஜி. ஓகே. நான் இந்த சாகித்ய அகாடமியின் இயக்குனர் மற்றும் இந்த நிகழ்வை நமக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிற கோஆர்டினேட்டர் மற்றும் என்னோடு கவிதை வாசித்த கவிஞர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். 4 கவிதைகள் நான் இங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண போறேன். அதுல ஒண்ணு வந்து நாற்காலிகள், சேர்ஸ். சேர்ஸ் வந்து ஒரு சிம்பாலிக் மெனி பீப்புள்ஸ். அனதர் ஒன் செஸ் போர்ட். மேம் கூட படிச்சாங்க இப்போ செஸ் போர்ட் வச்சு நான் ஒரு கவிதை சதுரங்கம். அனதர் ஒன் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம், கிராமத்து உழைப்பாளர்கள் பற்றி ஒரு கவிதை. அதுக்கடுத்து சுற்றுச்சூழல், என்வரான்மெண்ட் பத்தி ஒரு கவிதை. நேரம் இருக்கிற போது 4 இல்லைன்னா 3 கவிதை. என்னுடைய முதல் கவிதை நாற்காலிகள். கால்கள் 4 என்ற போதும் கைகள் பலவாய் நீளும் சில நாற்காலிகளுக்கு. அதிகார மணிமுடி தரித்து ஆணவ செங்கோல் தாங்கி மாணவ பந்தடிக்கும் சில நாற்காலிகள். தனக்கு பின்னான வாரிசுகளுக்காய் கஜானாக்களுக்கு காவல் இருக்கும்
சில நாற்காலிகள். உட்கார்ந்தால் ஒரு முழம் உள் வாங்கும் பகட்டு நாற்காலிகளை சம்பாதிக்க பதவி நாற்காலிகளை பயன்படுத்தும் சில நாற்காலிகள். நாற்காலிகளின் கைப்பிடியில் பெயர் பொறித்து நகர விடாமல் பார்த்து கொள்ளும் தனக்கானதாய் கட்டியம் கூறி சில நாற்காலிகள். வீடுகளின் வெளி வராந்தா ஓரத்தில் தென்னை இல்லாத குறை தீர்க்கும் முதியோரின் முடக்கத்திற்காய் சில நாற்காலிகள். தீண்ட முடியா உயரத்தில் உள்ள தென் பண்டங்களை திருடி தின்ன சிறுவர்க்கு உதவும் பொருட்டு சில நாற்காலிகள். விஐபி வீடுகளில் வணிக பங்குதாரரை, செருக்குற்ற செல்வந்தரை, திரையுலக பிரமுகரை, சீமான்களை வசீகரிக்க உடை மாற்றி தலை சாய்க்க கை வைக்கவென துணி உடுத்தி பகட்டு கோலம் கொண்டிருக்கும் சில நாற்காலிகள். அண்ணன் பாதுகையை அமர்த்தி அழகு பார்த்து தொண்டனாகவே வாழ்வு இழக்க துணை செய்வதாய் சில நாற்காலிகள். பதவி உயர்வுக்கு பரிசாய் கிடைத்த சுழல் நாற்காலியில் சுற்றி குதூகலிக்கும் இருமாப்போடு அன்பு கொண்டோரின் இதய நாற்காலி பறிப்போவது தெரியாமல் சில நாற்காலிகள். தமிழ் வருஷம், இது இங்கிலீஷ் அடுத்தது. Chairs. Though it has 4 legs, its hands broaden to loose for some chairs. Wearing the crown of power, holding the authority of arrogance as a scepter, and kicking the back of educators, a futures. Safeguarding the treasurers of the house, a futures. While sitting, it leans back a cubit to earn shows the posting of chairs used. To owning it, names engraved on chairs, and they never allow moving. At the corner of the front yard, it satisfies a place of sitting with the elders in the house. It helps children to reach the eatables at height. Few of these chairs. Few chairs in the residence of VIPs, the business partners, the proud wealthy, the film personalities. To receive popular people, it changes its colorful covers often. Keeping brothers' footwear and obeying is a pride for your futures. Baradan Raman Patele. Also, the rolling chairs received as the promotions, proud to enjoy the rolling. Finally, they are futures, unaware, missing the chairs of the heart. Oh, nice, ma'am. Very nice. Thank you, sir. அடுத்ததாக ஒப்புதல் வாக்குமூலம். உங்கள் கிராமங்களை இருட்டாக்கித்தான் ஒளிர்கின்றன எங்கள் நகரத்து விளக்குகள். உங்கள் கரடுபுரடான வாழ்க்கை தான் பாதை சமைக்கின்றது எங்கள் நெடுஞ்சாலை பயணத்திற்கு. உங்கள் சேற்று வயல் நடவுகள் தான் தீர்க்கின்றன எங்கள் சோற்று பஞ்சத்தை. உங்கள் வேர்வை கடலில் தான் மிதக்கின்றன எங்கள் சோம்பல் தெப்பங்கள். உங்கள் சந்தோஷ நிமிடங்களை களவாடித்தான் நகர்கின்றன எங்கள் உல்லாச வாழ்க்கை. உங்கள் கற்பூர வாழ்க்கையினால் தான் கைகூடி வருகின்றன எங்களின் வண்ண கனவுகள். உங்கள் உழைப்பை சுரண்டித்தான் உயர் மருத்துவம் பார்க்கிறோம் எங்கள் தீராத நோய்களுக்கு. உங்கள் குருதி சமுத்திரத்தின் குளிப்பாட்டலில் தான் உயர்ந்து நிற்கின்றன பல கோபுரங்கள். உங்கள் மேற்கூரையில்லா வாழ்க்கையினால் தான் நாங்கள் நிலவு பயன் கொள்கிறோம் நீல் மாடத்திலிருந்து. அன்றும் இன்றும் பாரத தேசத்தில் அமுதம் கடைபவர்கள் நீங்களாகவும் அருந்தி முடிப்பவர் நாங்களாகவும் இருக்கிறோம். காமதேனுவின் காம்புகளை கூட எங்களை சுவைக்கு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் நீராகர தூக்குகளில் நிம்மதியை தேடுகிறீர். வசந்த மண்டபத்தின் சாவிகள் இன்றும் வசதியானவரிடம் இருக்க மூடமுட்கள் உங்கள் பாதங்களையே புண்ணாக்குகின்றன. தலைச்சாயம் தேடாத நரைமுடியும், அரிதாரம் பூசாத அசல் முகமும், களங்கத்தை அறியாத விழி இணையும் மாற்றி மாற்றி போடும் எங்கள் முகமொடிகளோடு போட்டியிட முடியாமல் வெற்றிப்படிகளின் அடியிலேயே அமர்ந்து விடுகின்றன. சொன்னவை அனைத்தும் உணர்வு பூர்வமான ஒப்புதல் வாக்குமூலங்கள்.
தண்டனையிலிருந்து தப்ப உதவுமா உங்களின் பாவ மன்னிப்புகள்? English version. Yes. Self-confession. Our city glitters with lights, keeping your village dark. Your uneven life makes our express highways even and clear. Your yielding of paddy fields fulfills our food requirements. Our lazy boats float on your pool of sweat. Our celebrations are going on by stealing your pleasant moments. Our desert dreams come true by your flammable life. For our chronic disease, we take your hard work as medicine. The towers are erected with your garlands of blood. Your life in roofless hutch gives us a chance to feel the moon from our balconies. Wow. All these years in our nation were prepared Amrut, and we are the people to benefit from. You allow us to feed from Kamadhenu, and you relay the chip of satisfied with that. The keys of luxuries with the riches, and you still wood with the prickles. Your hair without dyes, your faces without makeup, the expressive eyes all sitting at the bottom of ladder of success. Not ready to complete with our nose that we often change. The above said are determined self-confessions. If you forgive, that may help us to escape from the punishments. Oh, nice, nice. Thank you, sir. Sadarangam, chess. கருப்பும் வெளுப்புமாய் கட்டங்களோடு காய்களும், கருப்பு கட்டத்தில் வெள்ளை காயும், வெள்ளை கட்டத்தில் கருப்பு காயும் இடம்பெறுகிறது தவிர்க்க முடியாமல். எல்லை கோட்டில் நேராய் நிற்கையில் கை குலுக்கி, கோணல் புத்தியை காண நிற்கையில் நறுக்கி நகர்த்தும் சிப்பாய்கள், கட்டங்களோடு ஆட்களையும் தாண்டி தாவும் குதிரைகள், குறுக்கு வழிகளை புறக்கணித்து நேர்பாட்டையை தேரும் யானைகள், ராஜாங்கம் காக்க சந்தடியின்றி சந்துகளில் பயணிக்கும் மந்திரிகள், நின்ற இடத்திலிருந்தே சின்ன சின்ன அசைவுகளால் சேனைகளை பம்பரமாய் சுற்றச் செய்யும் அல்லவை செய்யா அரசன், அரசாங்க அலுவல் நிமித்தம் முன்னும் பின்னும் குறுக்கும் நெடுக்கும் கலைப்பு பொருட்படுத்தலின்றி அரசி. இருப்பினும் அத்தனை சேனையும் ஆபத்து காலத்தில் அரசனை காக்கவே. சர்வ வல்லமை பெற்ற அரசிக்காக ஒருபோதும் அழுவதில்லை அரசாங்கம். எச்சரிக்கைகளை மீறி காக்க வழியின்றி மாலும் அரசனோடு முடிந்துவிடும் ஆட்டம் சதுரங்கத்திலும் கூட. Chess. The chessmen and the squares are black and white. White chessmen on black squares, black chessmen on white squares. This placement is unavoidable. Standing straight at the boundary, both shake hands with. If the mind is crooked, it cuts and moves away. Knights jump over squares and chessmen too. Avoiding the shortcuts, rooks choose and moves in straight lines. To save the monarchy, bishops move with no roots. Standing at the place with small moves, the king commands the army, only moves, no harms. On monarch service, she moves straight line vertically, horizontally, and diagonally. Queen never gets tired. In danger, the army never fails to save the king. Gains more power, fight till cut, never shout. Not counting the warning and no option to save the king dies and the game ends. It's in the game of chess too. Wow, wow, wonderful, wonderful.
Okay, thank you, sir. மரம் பத்தி ட்ரீஸ் தருவனம், புல்வெளிகள் பூமி தாயின் போர்வைகள், மரங்களோ பொறியாளர் வடிவமைக்காத நிழற்குடைகள், வெப்ப காலங்களில் மின் கட்டணம் ஏதுமின்றி வீசிவிடும் விசிறிகள், தமக்காக மட்டுமன்றி மண்ணில் வாழும் மற்ற உயிர்களுக்காகவும் வெயிலில் நின்று கொண்டு விரும்பி உணவு தயாரிக்கும் நல மகாராஜாக்கள், கால்நடைகள் பசி தீர்க்கும் நடைபாதை உணவு சத்திரங்கள், இறைச்சலை வடிகட்டி காற்றை சலித்து அனுப்பும் சல்லடைகள், வான் சிறப்பை உணர்த்தும் வருண பகவானிடம் இலையுதிர்த்து கரமேந்தி நிற்கும் உலக இரட்சகர்கள், பண்டமாற்றில் நல்ல காற்றை கொடுத்து நச்சு வாழை பெற்றுக்கொண்டும் நம்மோடு சண்டையிடாத பங்காளிகள், தலைவர்கள் பிறந்த நாளில் அடையாளம் தெரியாமல் நிற்கும் அழகு நிலையம் சென்றுவிட்டு திரும்பி வந்த பதுமைகளாய், நாகரிக அரசியலில் அடிக்கடி வெட்டி போடவாவது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நட்டு வைப்போம். தொடக்கத்தில் தொட்டிலாய், பின்னர் கட்டிலாய், துயர்கடலில் உறவை மூழ்கிவிட்டு உடலை ஏற்றிச் செல்லும் தோணியாய், மரம் மனித வாழ்க்கைக்கு பெண்மையை போன்றதொரு வரம். இங்கிலீஷ் வெர்ஷன். Forest of trees. The lawns are blankets of the earth. The trees are well designed by everlasting engineer, or canopy for shadows. In summer, they serve as fans without any power bills. Not only, but they also live, they stand in the sunlight, they prepare food, as they are the great king of Cook Nalaraja. They feed cattle as they are the roadside almshows. They filter the noises. They beg the god of rain by shedding their leaves and pray for rain and savaries of the world. As it water, they offer good air and takes the toxic air in exchange. These friends never fight with us. On the occasion of the birthdays of leaders, they look beautiful as they are groomed in parlors. In this indecent political situation, often trees have been cut down, and then we plant trees every year. They swing as the cradle, they hold as cot, at last leaving the relatives in sorrow, they carry as to heaven. Trees for mankind is a boon, like woman. Thank you so much, ma'am. It Thank was you, a sir. wonderful one, because you have taken two important things in our poetry. Okay, The sir. one thing, the trees, and Okay. you said in a most in a suggestive form, you said that they'll cut trees because as they have to plant them, as Okay, they sir. have to saw them. Okay, sir. It is so sarcastic, it's so nice, ma'am, in a much more way. And I don't know whether teachers always thinks like this, like parents. Here are the two teachers who went on explain chessboard again. Both my, because today's program is somehow a unique program, ma'am, because Okay, today we have all the 4 poets who are in a learning stream, and 3 of them are teaching stream, and another one is Ram Santosh, who is in a learning. Because as a saying goes that if teacher can't be a student, he'll not be able to teach better. So that's why a teacher should always be a Nitya Vidyarthi, which means he should be always be a student. Then only he can deliver the better things to the students. So Okay. in that way, we are all learning process only. So that's why I was really wonder that how two teachers do think alike, like Sharda Jhaji and Dr. R. Tamidhyarsis-ji. They went on explain the secret of the life with by comparing it in chessboard. And thank you so much, ma'am, Dr. R. Tamidhyarsis-ji, because you also explained the greatness of
the chair and how the chair colors changes as and when the position changes. And he also beautifully compared the tree with the Nala Maharaja, who is ready to serve the delicious food to the one who is asking for it. Thank you, So sir. I think I sincerely thank all the 4 poets, right from Professor Pankaj Parasharji, our young poet Sri Ram Santosh ji, our Dr. Sri Shardha Jaji, and Dr. R. Hamid Jarsi to for your wonderful poetry and sparing your valuable time with us, though you are always engaged in learning and delivering the goods to your students and your disciples. So thank you so much for your wonderful poetry and for sharing your poetry fragrance with us. With these few words, once again, on behalf of our most respectable Secretary Sir, Dr. K. Srinivas Rao ji, once again, I sincerely thank all of you. आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने समय हमारे लिए ऑलमोस्ट दे दिया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी दर्शकों को और आपको और एक बार धन्यवाद। जय हिंद।